Good morning, everyone. Welcome to Guruji English classes. Good morning, welcome. Good morning, welcome. So what are we going to do today? आज हम क्या करने वाले हैं? What are we going to today? What are we going to do today? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मैंने एक सीरीज बनाई है नई, वेरी इंटरेस्टिंग सीरीज ऑन यूट्यूब। इसका नाम मैंने दिया है चिंटू अंग्रेज मिंटू देसी। यहाँ पर मैंने ये नया प्लेलिस्ट बना दिया है, चिंटू अंग्रेज मिंटू देसी। यहाँ चिंटू और मिंटू के हिसाब किताब से आप अपनी जो भाषा है वो सीख सकते हैं। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से कि ये जो प्लेलिस्ट है चिंटू अंग्रेज और मिंटू देसी की, इसको जरूर देखिए, सीखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इसके अंदर काफी काफी मुश्किल इंग्लिश का भी प्रयोग मैंने किया है, जो आपको अपनी इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने में हेल्प करेगी, राइट। और हम जो सेक्शन कर रहे हैं वो है 50 कॉमन मिस्टेक्स। क्यों अंकित बाबू? आपका तो नेटवर्क मुझे लग रहा है परमानेंट ही खराब हो गया है। पहले तो बहुत सही आ रहा था इतने दिनों से, नेटवर्क चल रहा है हर जगह पे। मैं 2-3 जगह कई महीनों से तो अच्छा आ रहा था। हाँ सर, बट इधर कुछ दिन अब तो बहुत खराब आ रहा है, आपकी आवाज भी क्लियर नहीं आ रही है हाँ दोस्त। सर, इससे काफी हुआ है, लेकिन कोई चलिए कोई बात नहीं। तो हम कॉमन मिस्टेक्स कर रहे थे और मुझे लग रहा है हम कहाँ तक कर चुके हैं कॉमन मिस्टेक्स। लगभग सारी कॉमन मिस्टेक्स हम कर चुके हैं। तो पार्ट 1 की सारी कॉमन मिस्टेक्स कर चुके हैं। तो एनीथिंग स्पेसिफिक यू वांट टू नो, उनके चैट बॉक्स में डाल दो या बोल के बता दो, कुछ ऐसा जो तुम जानना चाहते हो। आज तुम्हारी मर्जी से क्लास ले लेंगे हम, नहीं तो फिर हमारी मर्जी तो चली जाएगी। मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। कोई क्वेश्चन आपका, कोई टॉपिक आपके दिमाग में कि इसको कवर कर लिया जाए? अभी नहीं, आपका सही है सर।
कोई टॉपिक नहीं है आपके दिमाग में? तो बोलो नहीं, जय श्री राधे। जैसे राधे राधे। देयर वॉज there was not there was once upon a time Alexander was going back from the from India. Alexander was going back, and one of his advisors. Am I clear? Am I audible properly, Ankit? Yes, sir. Audible, clear. Because I have a video stopped. Okay, thank you. So once upon a time, Alexander was going back from India, and one of his advisors suggested him. He said, the great Alexander, why don't we take uh, one of the sadhus, or one of the sages, or one of the Rishi Muni from India, and put him in our court. It would be a great idea. That is what his advisor suggested. Alexander's advisor suggested, let's take one of the sadhus from India to our court. Alexander really liked the idea. Alexander really liked this idea. And he said, yeah, great. Find one and let's take one with us. Then this advisor went out in search of one good sadhu, and he was searching in the jungles. At one riverside, this advisor saw one sadhu sitting under the tree. Not sitting, actually lying under the tree. The sadhu was lying under the tree. This advisor reached to this sadhu and offered him that, would you like to come with us? Would you like to be a part of the great Alexander's court? The sadhu said, no, I am not interested. This advisor was like little shocked that anybody in the world would be happy to be Alexander's court, to be in the Alexander's court, because the salary remuneration is very good, facilities are good, very good, and Alexander was the greatest king at that time. So this advisor tried to convince this sadhu and try to lure him, but this sadhu said, no, I am not interested. Then this advisor came back to Alexander and he told him the entire story, that the sadhu is not interested. I told him each and everything, that you will be part of Alexander's court and your salary will be good and you will be provided with so many facilities. Alexander was highly shocked that somebody in the world, a kind of sadhu, can say no to be part of his court. That's really weird. Alexander was very shocked. He said, let me go and see who is this sadhu and how can he say no to my offer? What kind of person this sadhu is? So Alexander went to the jungle with his advisor, and after reaching to this sadhu, Alexander said, hello, Mr. Sadhu, listen to me. This sadhu said, no, first you listen to me, Mr. Alexander. Alexander was shocked.
Alexander said, okay, you say. The sadhu asked Alexander, what do you want to do? Alexander said, simple, I want to be a conqueror. I want to conquer the whole world. The sadhu said, then what will you do after conquering the world? Alexander said, I will go home. Then sadhu asked, what will you do after going home? Alexander said, obviously, I would be tired after conquering so many countries. Then I will go home and obviously I will take rest. The sadhu said, stupid Alexander, you will take rest. Ultimately, after conquering so many countries, the ultimate thing you will do is rest. You will take rest. And you know what? I am already taking rest. The sadhu said, I am already taking rest. This sadhu doesn't need anything. So the real people, the real happy people in this world, they don't need anything. So sometimes it's great. Are you getting, Mr. Ankit? That you don't have any questions and you don't Yes. need anything. So you are one of those sadhus, I would say. Yeah. So what do you think about your situation? Sometime I can say not. Sometimes I feel like that What do you feel like? limited resource. Not much need, only ecological or I can say natural environment sufficient for our happy life with daily needs. You can say supplements or things. Not Good. much more. But sometimes, But when sometimes the shirt you are wearing, actually your voice is not audible here. Actually, your internet is not that much effective. But I can give you homework. okay, I'm trying to. I can give you homework that you can create a video on this topic in Hindi or maybe in your language. Okay. So Okay. I would like to listen to your ideas on this topic. But this topic is really interesting. This universe is our part. We are part of this universe. This universe has some energy and we have the same energy because we are part of universe. So at energy level, universe and we both are same. Again, sir. We are part of the universe. You Okay. agree? Yeah. If we are part of the universe, some unknown power is controlling the universe, or I am controlling the universe. Some unknown power. Like I am very small part of this universe, right or wrong? Right, but we control our universe. I'm coming to that point. Okay. Okay. We are tiny part, very tiny part of this universe. There are millions and trillions of living beings and things in this universe, and they are all being controlled, and everything is being done in the most appropriate way as it is planned by the universe. You just need to have faith. The universe is doing everything good. Be happy, thankful to the universe, and just keep chilling. Right? Right. And there was another story. So from Alexander. When you know the story when Alexander died, what happened? Not Alexander. That was Sikandar when he died. My dear student from Mirzapur, Sikandar and Alexander both are same. Okay. Now you tell me the story of that Sikandar. Yeah. Died. What happened? You tell me that story. When he went. Speak loudly.
Speak loudly. Maybe you Came remove back. this headphone. This headphone is not good. Try to remove this headphone Okay. from the mobile. Now try to speak. Okay. When he go back to his own land, and after spending much more time with whole world in regard to war, he finally feel that what he's finally found is in his life when he was sick. So he realized that he's not getting anything in his life that's he actually want, as the sadhu said. So in last time he said that when I will die, open my hand out of my coffin, so everybody can see that what I get in my whole life, what is my achievement after that. Tell this story again in a better way now. Yeah, start. Okay, when he came back his own land, and his whole life was struggle during the war in different place and in the world, and he found in his last day of his life, his think that what he's got it in his get it in his in his whole life. That's was Indian saint said his what is your final destination, and what will do after his getting whole the pride and you can say money of the whole world. Lastly, he realized that he's not the means of all these things that he achieve in life, and so he uh, said when he will die, his hand should be open out of coffin, to which all the citizen of his city and countries can see what that was achieved in his whole life. Good, good, very good. But now try to tell this story in a Shashi Tharoor style, in a some good, great style. Like, for example, Barack Obama is speaking. Maybe Martin Luther is speaking. You know, have you seen Martin Luther speech? Yeah, one or two time. Okay, note it down. This is the homework. You have to listen to that 15 more times. Maybe in next 3 days, 5 days, 10 days. Take your time, but you have to watch it. Maybe at least 15 times. That is super magical speech. Yeah, I was. Because in this speech, you get to know where you have to be strong, where you have to go slow, where you have to be louder, and where you can be softer. Because Martin Luther had a dream. Understand? Yes, sir. Okay. Now let me tell you this story in my words. I don't know the whole story. I just know that when it was the last time of Alexander the Great, Sikandar the Mahan, both are same. Okay. You did not know that? Uh, no confusion was there, but I was thinking that both person are different. Now both are same. In the whole world, Alexander is the only person who has English name and Hindi name. Alexander and Sikandar. Any other person? I think some more people are there. Maybe I don't know. 2-3 people are more there who has English name as well as Hindi name. But Alexander is very famous in that matter. So when Alexander was there and he realized that it is his last time and soon he is going to depart from this world, that time he had
a wish. He made a wish and he announced to his advisors, to the mantris, to the prime ministers and ministers, and to the all responsible people in his court that when he die, when he die in the coffin, make 2 holes and keep his hands outside, and his hands should be open outside of the coffin, and his hand should be open. So all the senior ministers, they got worried. Why are you making this strange wish, dear the great Alexander? Alexander said, I want to let the world know. I want to let the world know that Alexander the Great, who has conquered the whole world, is leaving this world empty-handed. Right? Right, sir. That was the message. I want to let the world know that when Alexander, who conquered the whole world, is leaving this world empty-handed, what are you going to take, Mr. Ambani, Elon Musk, Jeff Bezos, Sunil Chaudhary, Ankit Singh, and for that matter, anybody else? Right? Right, So sir. happiness has nothing to do with money, but if you have a wish, if you have a wish, desire, then Mr. Ankit, you need to fulfill that desire. Otherwise, you are not justifying your life. That is another truth. He had a desire to conquer the world. He fulfilled his desire. Then he realized, then he made the statement. Then we are discussing his statement right now. Because he followed his desires and he fulfilled his desires. If you have a desire, it is your duty to fulfill that. It should not be like that I want to have Mercedes, I want to have BMW X5, I want to have luxury cars, luxury homes. But right now, I'm not able to see how can I have this cars, how can I have this car and servants and this much money. And because I don't have any system to create all these things, I am saying I don't need anything to happy. That is stupid. Yeah. You are killing your desire because you don't have ability. That is not real happiness. That is called cowardice. What is that called? Cowardice. Cowardice, कायरता. Right. आपके अंदर कभी desire आती ही नहीं. You did not have desire ever. And you would be saying like happiness doesn't mean Mercedes and big homes and traveling around the world. Then we would accept your point. But sometime you desired that you should have everything, all luxury in the world. And now you are not able to create that. And now you are saying, I don't need anything to be happy. Then this is the most stupid thing. Then you are no more better than Rahul Gandhi. He wants to become PM, but he cannot become PM. And because he cannot become PM, he is saying, I don't want to be PM. Right? So that is the most stupid thing. And the whole world can see. Are you getting me? Yes, sir. So being happy, being content is okay. But like somewhere you want to go off-roading in Jeep Wrangler, Yeah. and you need at least 5 crore rupees for that. And right now you are not able to create even 30,000 rupees per month with the system, proper system. And now you are saying, I am Babaji, I don't need anything for happiness. This is not justified. So this is the difference. So hope we understood the logic today. Who is real happy and who is not, and who is trying to pretend that I am happy. Yeah.
So I people listen to you when you become a achiever, right? So whole right. world listen to Mr. Baba Alexander because he was an achiever. Yeah, you were saying something. Yeah. Uh, yes. Before this conversation, I was I very was. yeah. I was confused about this between these two things because this is very contradictory. Kanti, what exactly the confusion? Sometimes I need nothing हाँ except मतलब मुझे कुछ नहीं चाहिए. I am really happy. I don't need anything. ये है ना? yeah, except ecological system around me with general use things. But sometime when we go out of the home, out of the city, we need some extra because we all need privileges in compared to other. So this is very important to do. First of all, achieve that, and then get out. You can say leave it. No. Would you not love this that you are spending 2 days with your family in Paris? You're going to visit Eiffel Tower with your parents. Would you not love that? Tell me. Again, sir. That will not be a good idea that you visit Paris, city Paris, the most beautiful city Paris with your family, with your mother and father. Yeah, I not like much like that, but we can say we They can will not feel good. not. When they will visit places like Paris, France, Uh, Italy, London Bridge, Actually, Granada. you can say I can more like Niagara in compared to these things because Niagara means? Niagara Fall, America. So No, that is one preference. yeah, But your parents will feel good or not when they are able to travel. Right now, they are not able to travel whole India. But yeah, imagine if they can travel to all countries. yeah. They can go on a cruise. They can go in a airliner. They can go to London Bridge. They can go to the Statue of Liberty. Obviously, they feel much And you much. will post a photo. Yeah. तुम्हें गांव वाले कहेंगे क्या कहेंगे जी तो हमारे गांव के तो हमारी भाषा होगी तुम्हारी भाषा में क्या बोलेंगे अरे ये सब कहाँ कर मैं देखा तो फोटो बना के जाओ बैकग्राउंड लगा के हाँ everybody likes luxury but like if you don't have any desire that's a different thing desire अंदर है then you have to take action बेटा otherwise you are deceiving yourself नहीं तो आप खुद को धोखा दे रहे हैं हाँ हमें कुछ नहीं चाहिए खुश रहने के लिए वास्तव में कुछ नहीं चाहिए हकीकत है सत्य है मान लिया बट अपने अंदर पूछो अपने दिल से पूछो ask yourself if you have desire or not Ambani doesn't need anything to be happy but he has Antilia $2 billion home the most luxurious home in the world you know Antilia Yeah. how many floors are dedicated for parking It was nearly 30 around figure. 6 floors are dedicated to parking and how many helipads there No idea. what to do with that man I saw Intellia, but not like much you more saw detail. Antilia in movies or like in real Not in real, in picture. so you saw Antilia or you have seen Antilia I have seen why not saw because this is remember now what the image and the figure is now remember. So what it has to do with
have seen. What is the logic of this? You are saying saw, sometimes you are saying have seen. What do you want to say? Actually, I want when I say I saw Antilia, it means I was not interested about that. Not feel much attractive and we can say more much. Well, one sentence is I saw Antilia, and another sentence is I have seen Antilia. Yeah, now explain. एंटीलिया was मतलब I saw एंटीलिया मतलब एंटीलिया था और मैंने उसको देखा था. I have seen एंटीलिया मतलब एंटीलिया भी है और मैंने उसको देखा है. अच्छा, इतना ही मतलब है, कुछ और भी हो सकता है? नहीं, मुझे तो यही लग रहा है. देखो ऐसा है इसमें, इन द फर्स्ट सेंटेंस आई सॉ एंटिलिया, मैंने देखा था एंटिलिया, मैंने देखा था, मतलब देखो ऐसे है, when I visited when I visited Mumbai, I visited, मेरी आवाज आ रही है? Yes, audible. I visited many places. यार कुछ यूट्यूबर्स बड़ी तेज चिल्लाते हैं, मैं भी सोच रहा हूँ मैं भी चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया करूं, क्या वो ठीक रहेगा? No, sir. I visited many places. नहीं यार, वो बहुत जोर से पढ़ाते हैं, उनके सब्सक्राइबर बहुत तेजी से बढ़ते हैं, तुम नहीं चाहते मेरे सब्सक्राइबर बढ़े? I'm like that. I'm like subscriber will increase, but not. चिल्ला चिल्ला के नहीं है. नहीं, इसलिए नहीं. So many places. I visited many places. तो मैं पास्ट की पूरी कहानी बता रहा हूँ, पास्ट में क्या क्या हुआ, पास्ट में क्या क्या हुआ जब बताता हूं तो मैं सिंपल पास्ट यूज करता हूं. आई सॉ SRK होम, मैंने SRK का घर देखा था, देखा. आई विजिटेड KB होम, अमिताभ बच्चन होम. ऑल्सो आई सॉ एंटीलिया ऑन द वे, रास्ते में मैंने एंटीलिया भी देखा था, क्योंकि वो सड़क किनारे ही तो है. वो एक सड़क पे जाते हैं तो सीधे हाथ पे पड़ता है, उधर से आएंगे तो लेफ्ट हैंड में पड़ता है. पास्ट की इंसिडेंट्स आप बता रहे हो. आई हैड डिफरेंट टाइप्स ऑफ foods. I really enjoyed my trip to Mumbai. अंकित 1 मिनट देना जरा. So when we talk about past, simple past, आवाज आ रही है मेरी? Then we keep the things in simple past, बिल्कुल simple past में रखते हैं इस तरीके से. But when experience
when we want to show, जब हम दिखाना चाहें या बताना चाहें क्या, that experience is still there, उस चीज की यादें अभी भी हैं, उस चीज का अनुभव अभी भी है। अभी भी। अगर ऐसा कुछ बताना चाहें कि अभी भी है, तो फिर हम प्रेजेंट परफेक्ट इस्तेमाल करते हैं। आई हैव सीन परफेक्ट। When we want to show, tell that experience is still there, the thing is still there, the person is still there, the person is still there. बट यहाँ जो हमने ये स्टोरी बताई, इसमें सिर्फ बताया मैंने पास्ट में एक घटना घटी थी, उस घटना में क्या क्या हुआ, मैं सिर्फ घटना बता रहा हूं, उसका होना ना होना मैं फिलहाल नहीं बता रहा हूं, मैं बता ही नहीं रहा हूं, मैंने देखा। बट जब आप हमें बता रहे थे बातचीत में कि मैंने एंटीलिया देखा, तो आप उस एक्सपीरियंस को लेकर आ रहे थे। क्या कर रहे थे आप? क्या कर रहे थे? एक्सपीरियंस को लेके आ रहे थे। तो आप वहां पे बोलोगे मैंने एंटीलिया देखा हुआ है, यानी उसकी यादें अभी तक आपके दिमाग में हैं। सेंटेंस हिंदी में देखिए, देखा था, देखा हुआ है, आपके बताने के तरीके ऊपर डिपेंड करता है। जो आप बताना चाह रहे थे वो आ रहा था आपका प्रेजेंट परफेक्ट में, देखा हुआ है मेरा, देखा है मैंने। No, actually, that was in past because I am not much more interested. In second sentence, the person who is explaining about the things is more interested and sharing his experience. वो तो पूरी घटना बता रहा है, तो पूरी घटना बता रहा है, उस घटना में बहुत कुछ घटा है, बट यहाँ तो वो उस एक्सपीरियंस को लेके आ रहा है अभी तक, स्टिल देयर, अभी तक। जैसे कि आई लर्न इंग्लिश इन 2003, मैंने 2003 में अंग्रेजी सीखी। तो ये सिर्फ मैं घटना घटी वो बता रहा हूं। देखो, एक घटना घटी थी 2003 में, जब गुरुजी इंग्लिश क्लासेस वालों ने इंग्लिश सीखी थी किसी गुरु से, राइट? अब मैं क्या बोल रहा हूं? आई हैव लर्नड इंग्लिश, मैंने अंग्रेजी सीखी है। अब देखना, आज 20 साल बाद भी सेंटेंस बोल रहा हूं, मैं अंग्रेजी सीख चुका हूं, यानी वो सारी घटनाओं का अभी तक इम्पैक्ट है मेरे ऊपर। अंग्रेजी सीख चुका हूं, आई हैव लर्नड संस्कृत, आई हैव लर्नड इंग्लिश, आई हैव लर्नड लिटरेचर, आई हैव लर्नड पॉलिटिक्स, आई हैव लर्नड इकोनॉमिक्स। आवाज आ रही है क्लियर मेरी? यस सर, ऑडिबल। वेरी गुड, ये माइक काम कर रहा है, इसका मतलब सही तरीके से। अब ज्यादा अच्छी आ रही होगी? स्लाइटली वाइब्रेशन। तो ये इस तरीके से काम करता है, आई हैव लर्नड इंग्लिश। अब देखना, अंकित को पटना जाना है, गोरखपुर जाना है, बरेली जाना है, नोएडा जाना है, एंड फिर गो बैक टू मिर्जापुर जाना है। समझ रहे? यस। ये सब होना है, दिस इज प्लानिंग, दिस इज प्लानिंग। अभी क्या है, अंकित निकल चुका है और पटना गोरखपुर डन हो गए, गोरखपुर डन हो गए। अभी वो कहां पर है फिर? या तो ऑन द वे टू बरेली है, ऑन द वे टू बरेली है, या बरेली में है, यही सिचुएशन होगी, राइट। तो हम सेंटेंस ऐसे बनाएंगे, अंकित हैज विजिटेड पटना एंड गोरखपुर, क्योंकि वो उसके प्लानिंग में था, उसको करना था, करंटली उस चीज की बहुत ज्यादा वैल्यू है,
उसका टारगेट कंप्लीट हुआ है, तो वो उसके उसमें आता है अचीवमेंट में। अंकित हैज विजिटेड पटना एंड गोरखपुर एंड नाउ ही इज ऑन हिज वे टू बरेली। समझ रहे? वो Yes, sir. बरेली में है। दूसरा क्या बोल सकते हैं? बोलने के तो बहुत सारे तरीके हैं। अंकित इज डन विद पटना एंड गोरखपुर। अंकित इज डन विद पटना एंड गोरखपुर एंड he is now he is visiting Bareilly. Now he is visiting Bareilly. But ये is आया है यहाँ पे भी, is done. He's done with that is पटना एंड correct. गोरखपुर। यहाँ कुछ कंफ्यूजन तो होगी तुम्हें थोड़ी बहुत। Yeah, with के साथ पूछो। Yeah. अंकित का पटना और गोरखपुर के साथ हो गया, जो होना था, जो भी होना था वो हो गया। कई बार ब्रेकअप जो होता है ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, वो ऐसे होता है, आई एम डन विद यू। Yeah. Okay. आई एम डन विद यू, मेरा जो होना था तुम्हारे साथ हो गया, कहानी खत्म। यानी जो भी काम था, लेना देना था हमारा, हो गया। अब मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। इसकी इंग्लिश ये भी हो सकती है, आई एम डन विद यू। Yeah. या फिर जरूरी नहीं नेगेटिव हो, पॉजिटिव में भी हो सकता है, वी आर डन विद ईच अदर। मतलब हमारा एक दूसरे का हिसाब क्लियर हो गया है। नाउ लेट्स फोकस ऑन अंकित। हमारा आपस में हो गया है, हम अंकित पे ध्यान देते हैं। 3-4 लोगों का लेन देन था पैसों का, हम दोनों का आपस में क्लियर हो गया है, हम अंकित पे बात करते हैं। अंकित पे मेरे कितने निकल रहे हैं, उसके कितने हम पे निकल रहे हैं। लेट्स फोकस ऑन अंकित। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सिचुएशन में हो जाता है। या मानवी इज डन विद हिंदी एंड नाउ शी इज डूइंग इंग्लिश। समझ रहे? मानवी का हिंदी हो गया है, जो भी काम था होमवर्क उसका, और अब वो इंग्लिश कर रही है। उसको ऐसे भी बोल सकते हैं, मानवी हैज डन हिंदी होमवर्क HW, जिसे वो बोलती है, एंड नाउ शी इज डूइंग इंग्लिश। राइट? Right. चलिए अब हम थोड़ा सा चैट जीपीटी का फायदा उठा लेते हैं। इस आदमी को जानते हो? No, sir. भाई साहब, इसके 2,73,000 फॉलोअर हैं। समस्या ये है, इस आदमी ने 11 अगस्त के बाद कोई पोस्ट नहीं डाली है। अब इसको हम सोच रहे हैं कैसे कांटेक्ट किया जाए, हालचाल पूछा जाए, हमें चिंता हो रही है इसकी। तो तुम भी सोच रहे होगे खोल क्यों रखा है। सोचो कितना दिमाग लगाते हैं। 11 अगस्त के भाई बाद कोई भाई ने पोस्ट नहीं करी, उससे पहले ये रोज हर तीसरे चौथे दिन पोस्ट करता था। पूरे वर्ल्ड में फेमस है ये, हिंदी उर्दू स्पीकिंग दुनिया में बहुत फेमस, बहुत तंगड़े। जानते हो इसको? सुना है कभी? No, sir. हाँ, तुम तो हो वही साधु हो, तुम उसी साधु के अवतार हो तुम, जो अलेक्जेंडर को मिला था। ठीक है, चलिए चैट जीपीटी का प्रयोग करते हैं। चैट जीपीटी के माध्यम से अपनी इंग्लिश को थोड़ा अच्छा करने की कोशिश करते हैं। 50 सिली मिस्टेक्स इंडियंस मेक। 5 मिनट करेंगे, ज्यादा नहीं। तुम लेट हो रहे होगे कहीं जाने के लिए। No, sir. I'm free today. I'm going to back home. कहाँ से कहाँ? Sonbhadra to तो कब से, Sahijangan. महीनों से सोनभद्र में ही हो? No, sir. Nearly
4 day ago visited. Before that 4 to 5 days, I again back to home for 2 to 3 days. ये इसने क्या लिख दिया? ये तो हमारी गलती है ना, हमने इससे क्या पूछा? 50 silly mistakes Indians make ये कौन लिखेगा? while वो उसने कुछ और ही दे दिया हमें। speaking English. स्पीकिंग में अभी भी हमने गलत लिख दिया है। ये तो 1 घंटे तक लिखता ही रहेगा। पिछला होमवर्क कंप्लीट है क्या तुम्हारा? Except video. कंप्लीट करो यार तुम अपना, वीडियो वाला ही तो होमवर्क सबसे जरूरी होता है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट होमवर्क इन 2023। बताओ फटाफट से, क्या गलती बता रहा है ये? बताना है क्या गलती है। एक्सप्लेन। Pronouncing 3 and 13. थी दोनों में था ही है। TH है but pronunciation is different. नहीं, दोनों में था ही तो है। थ्री था तो है दोनों में, क्या अलग है? अच्छा, इसमें 3 है, इसमें ठा है, 13 है, ऐसे है। 13 नहीं होता ना, ये 13 होता है। कहना क्या चाह रहा है ये? अगर ऐसी चीज चैट जीपीटी ने बताई और समझ में नहीं आई तो क्या करोगे? गुरुजी से पूछेंगे। क्या? गुरुजी से पूछेंगे। अरे काहे पूछेंगे गुरुजी से? एलैबोरेट, फिर ऐसे लिख देंगे। एलैबोरेट के बाद वही वाला पॉइंट ठोक देंगे। खुद एलैबोरेट करेगा। उसने रायता फैलाया, उसी से समेट पाओ। गुरुजी से काहे समेट पाओगे? तो वॉइसलेस था। The sound is made by gently placing the tip of the tongue between the upper and lower front teeth without vibrating the vocal cords. It is the sound you hear in the words like thi, think, thin and math. दांतों के बीच में आ रहा है भाई, जब देखना बोल के, think, thin, math. आ रहा है क्या? Yes. उसके बाद है this sound is similar to the voiceless tha sound, but it is voiced, which means the vocal cords vibrate while making the sound. You can find this sound in words like they, this, that, and brother. ये तो ऊपर वाले दांतों के पीछे जीभ जा रही है। this ऊपर वाले दांतों के ठीक पीछे जीभ टच मार रही है। this, that, and brother, the, this, that. That. Many Indian languages do not have equivalent sounds, so learners may try to substitute them with similar sounds they are familiar with. For example, voiceless tha sound may be replaced with a, s or z sound, resulting in pronunciations like sing instead of thing. Sing है मतलब बेवकूफ है, ऐसा थोड़ी होता है। थिंग को सिंग कौन बोल देगा भाई? ऐसा कोई दिखा है होशियार आदमी? ये समझ में आया। अरे समझ में कहाँ जाएगा? ये कह रहा है थिंग को कभी कभी सिंग बोल देते हैं इंडियंस, ऐसा थोड़ी होता है। ज्यादा ही फेंक दिया इसमें। Unfamiliar tongue placement. Placing the tongue between the teeth for the th sounds can be physically uncomfortable or awkward. For those not used to it, it requires practice to develop the muscle memory for this tongue placement. ये देखो, ये जो चीज है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, मसल मेमोरी। आपकी बॉडी में ना हर चीज की मेमोरी होती है।
सुबह जल्दी जगने की मेमोरी हमारी डेवलप हो पा रही है थोड़ी धीरे धीरे अभी भी। इतने दिनों के बाद भी हम कह सकते हैं कि अभी भी मतलब बॉडी कहती है सो ले बेटा। ठीक है। Right. तो ये जो मसल मेमोरी बॉडी मेमोरी होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको इन्हीं को शायद इंद्रियां बोलते हैं। Yeah, Jaggi Basdev had said her single cell has own memory and own DNA. हाँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये हर सेल का हर उसका मेमोरी डेवलप करना। कंफ्यूजन बिटवीन वॉइसलेस एंड वॉइस्ड sound for both leading to mispronunciation. Practicing tongue placement. Spend time practicing the correct tongue placement for both tha sounds. तो एक तो था होती है एक ठा होती है। वो कह रहा है अंग्रेजों को देखो सुनो और उनकी नकल मारो। एक होती है टा टंग, पर हम तो टीएच की बात कर रहे हैं ना, टंग। Practice with minimal pairs. Work on distinguishing between minimal pairs such as think and this, think, this, think, this. गाना गा दो, वीडियो बना दो, think, this, think, this. This. Ask for feedback from teachers, language partners, native speakers. ये लंबी चौड़ी कहानी बता दी। कुल मिला के भैया था और दा होता है इसका। था और दा दो साउंड होती हैं, था। और जो कह रहा है हिंदी में होती है इंग्लिश में नहीं होती, इंग्लिश में होती है हिंदी में नहीं होती। मतलब यार ये सी चीज ना हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब कल परसों की भाषा हमें सिखाएगी। ऐसा है था तो हम बोलते हैं ना, था क्यों नहीं होता था हमारे पास, हमारे पास था नहीं होता। होता था। इनको तो टी और एच मिला के लगाना पड़ता है था, हमारे पास तो स्पेशल कायदे का था है। इनको टी और एच मिला के दा लगाना पड़ता है, हमारे पास कायदे का दा है। मतलब हमारा मुकाबला करेंगे यार, ये मतलब हद हो गई। तो टू मच हो गया। Too much of ऐसे थोड़ी होता है, कान कान सेक देंगे हम इनका। it. चलो फिर आज के लिए दोस्त इतना ही बहुत है। होप यू एंजॉयड द क्लास Yes, sir. एंड सी यू ऑन मंडे होपफुली। मंडे को क्या है पहले ही बताओ। हाँ, तो मंडे को क्लास रहेंगी। देन आफ्टर 5 days आई एम गोइंग टू चेन्नई। तो फिर 4-5 दिन क्लास हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। इस बार कोशिश रहेगी कि हो जाए क्लास। इतना आसान भी नहीं होता है जब हम मस्ती के मूड में होते हैं तो। Yeah, it's not good, sir, because we are on vacation, so enjoy full to all. वेकेशन नहीं है, क्लास लेने जा रहे हैं गुरुजी से। Okay. वेकेशन नहीं है, So समझ रहे हैं। okay. हम्म। You said that enjoy, so I think that it will a question. मतलब 8-10 घंटे तो क्लास ही चलेगी, समझ रहे हो। तो पता है ना हमारा गुरुजी कौन है? Yeah. कौन? Siddharth. हाँ, वही हमारी मीटर खींच के रखे हुए हैं। वही कहते हैं सुबह जगो, वही कहते हैं क्लास लो। उन्होंने हमारी मतलब टाइट कर रखा हमको। और जब आप टाइट हो जाते हैं किसी गुरुजी की शरण में आके, नैया पार हो जाती है आप। वैसे हम खुद गुरुजी हैं, वो हमारे गुरुजी हैं, उनका भी कोई गुरु है, उसका भी कोई गुरु है। अभी भी 8 चेन है, 8 सीढ़ियों तक गुरु है हमारे। अभी भी मेरे ऊपर, मेरे नीचे भी हो सकते हैं 2 4 5 सीढ़ी, ऊपर 8 है। सोचो यार, मैं सिद्धार्थ, सिद्धार्थ का गुरु सैम, सैम के ऊपर भी 5 है।